Chapter number 4 Cell and Tissues Syntax Book Class 9th Students, अगर आप हमारे previous lectures देखना चाहते हैं तो please must watch our previous lectures by the name of channel Dr. Raza Academy. Now we are continuing our part 6. Cytoskeleton. Cyto means cell, skeleton means skeleton, the skeleton of cell. The composition of a skeleton of cell is made up of microtubules, intermediate filaments, and actin filament. Microtubules are made up of tubulin proteins. Actin filaments are made up of active proteins. साइटोस्केलेटन पूरे सेल में एक जाल की तरह फैला हुआ होता है और इसका फंक्शन होता है कि ये सेल को शेप प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. The further detail lecture about cytoskeleton is provided in our first year class lecture. Mitochondria, which is also known as the powerhouse of cell. It is a membrane-bounded organelle. Membrane-bounded organelle हम ऐसे organelle को कहते हैं जो कि डबल membraneous हो. माइटोकॉन्ड्रिया सेल में डिफरेंट स्पेसिस मतलब डिफरेंट जगह में साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं और ये हर तरह के यूकेरियोटिक सेल में मौजूद होते हैं एक्सेप्ट इरिथ्रोसाइट्स जिसे हम आरबीसीज भी कहते हैं. रेड ब्लड सेल्स जो मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं. ऐसे सेल्स जिनकी वर्किंग हर वक्त होती है, उन्हें हर वक्त एनर्जी की नीड होती है, तो इस तरह के सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट ज़्यादा होता है. फॉर एग्जाम्पल कार्डिक सेल्स. कार्डिक सेल्स वो सेल होते हैं जो हमारे हार्ट बनाते हैं. Our heart is 24 hours pumping blood, so it required more and more energy. So that's why the cells of cardiac cells have more mitochondria as compared to other cells. Structure of mitochondria. If we talk about its size, 0.2 to 1.0 नैनोमीटर in diameter, मतलब इसकी चौड़ाई 0.2 से 1.0 नैनोमीटर तक होती है और इसकी लेंथ 10 माइक्रोन होती है और शेप इसकी मोस्टली रॉड और थ्रेड लाइक या सिलेंडर शेप होती है और इसकी शेप वेरी करती है एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स में. सो नाउ कम टू दी डायग्राम. डायग्राम में सबसे पहले मैंने आपको कहा कि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, तो इसके पास दो मेम्ब्रेन्स हैं, एक आउटर और दूसरी इनर मेम्ब्रेन. ठीक है. आउटर मेम्ब्रेन इन येलोइश कलर एंड इनर मेम्ब्रेन हैव सम फोल्डिंग्स. ठीक है. ये सम फोल्डिंग्स जो हैं इसे हम क्रिस्टाई कहते हैं. ठीक है. और ये क्यों होती हैं फोल्डिंग्स? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है कि वो एटीपी की फॉर्मेशन करें. एटीपी की फॉर्मेशन मीन्स एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट विच इज नोन एज द करेंसी ऑफ सेल. मतलब सेल में अगर कहीं भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी फॉर प्लेइंग द फंक्शन, सो दे यूटिलाइज एटीपी and this ATP is synthesis into the mitochondria. And where in mitochondria? In the cristae of mitochondria. That's why cristae have more foldings to increase the surface area for the formation of ATP. ठीक है. Then come inside this inner membrane, there is a matrix. ठीक है. Matrix is a fluid-like structure and in matrix DNA, ribosomes are present. The function of ribosomes is to synthesize the protein which is utilized by mitochondria. The function of DNA is this: the mitochondria is self-replicated. It can be replicate itself and due to the presence of DNA. And students,
In our body cells, our mitochondria is coming from our mother side. Functions of mitochondria: synthesis of ATP, adenosine triphosphate, site of aerobic respiration means सेल में जो इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन होती है उसका फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया प्ले करता है, ठीक है। एंड इट कैन बी सेल्फ रेप्लिकेटेड मीन्स अगर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की मोर रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए पूरे सेल को डिवाइड होने की ज़रूरत नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया खुद से खुद को रेप्लिकेट कर लेता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इट्स ऑन डीएनए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, abbreviated as ER. It is a membrane-bounded organelle and present near the or attached to the nuclear envelope. Its structure is a sheet-like hollow foldings having a sac in their ends called cristae. These sheet-like foldings are called cristae, and these cristae have some space which is called cristae space, and few matrix are present inside them. Endoplasmic reticulum is present in only eukaryotic cells. There are two types of the endoplasmic reticulum. One is the rough endoplasmic reticulum and other one is the smooth endoplasmic reticulum. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, एक्चुअली दीज आर राइबोसोम्स। जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स मौजूद हो उन्हें हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्री फ्रॉम राइबोसोम्स हो, जिन पर कोई राइबोसोम्स मौजूद ना हो, उन्हें हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। Functions of endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum, the synthesis of lipids including oils, phospholipids and steroids, responsible for metabolism of carbohydrates, regulation of calcium concentration and detoxification. Detoxification means to toxify the toxic material. Rough endoplasmic reticulum is responsible for the protein synthesis due to the presence of ribosomes on them. Dr. Raza Academy and Educational Consultancy. Must watch, comment, share and subscribe our channel. Our video recorded lecture are also provided on the YouTube channel by name of Dr. Raza Academy.